Hello everyone. Today now just I'm starting with the topic primary capital market, its meanings and elements. So first of all, here primary market arises as when the public companies wants to raise the capital by issuing such type of securities. At that time primary capital market comes into existence. So here actually public issues contains are actually included in the money market, but here public companies usually makes a public issue of various securities like equity shares, preference shares, bonds, debentures, etc. They actually take into consideration by taking the factors also into it, factors like market condition, capacity of investors, their mental attitudes or the moods. So here actually these type of securities are working under the guidelines given by the SEBI, that is according to the Contract Regulation Act. So here the existing companies can also raise the money from the primary market by offering the right shares for cash or through convertible debentures. So this was just the introduction about the primary capital market, but now we will just see what actually and how it works. So here primary capital market सबसे पहले here it is like that कि they are, as I just told you in the introduction, that they just public companies can get the chance to raise the capital, so they can raise through issuing various type of securities. That is what called an primary market. So here primary market of the new issues functions through the companies issuing the capital through cash or through any other substitutes, that is government or non-government institutions, public sector units and all other financial institutions that actually are working for the public issue and the authorized brokers. So here ordinarily new capital is actually raised through equity shares, preference shares, debentures, right shares, bonus shares, deposits, loans, etc. And also here the investors and the other institutions are also under working under it. Various institutions like IDBI, ICICI, LIC, GIC, UTI, all these are essentials that are working with it. So now here to help those companies actually for raising the fresh capital, some banks also have to start. So here the bank named Merchant Banking Division has helped here to raise the fresh capital. So here underwriters according to their economic condition guarantee the purchase of the share of the new issue or form a private company for investment and consistency and invest money as well as manage the process of issue of shares. So here underwriters are actually seeing their economic condition about the new issuing of purchasing the shares for the private company, and accordingly they also manage about the process of issuing such type of shares. So here in addition to that, maintaining the loans from the bank and also the other permissions which are actually to be granted, they help with SEBI. They take it from the SEBI. Now here general matters which actually to be taken with the primary capital market into consideration are as such. First one is like issuing of primary issuing, that is public issues, right issues, shares, private placement. So these all are the types of primary issues. Now we will see the second is like deciding about the securities for issue, deciding actually the method, that which method should be followed for issuing such shares, time and particular date of issuing of shares, particular time limit for issuing of shares, and here also the expense of issuing of shares. So these all the matters are to be considered while issuing the primary capital market. Now here the in details all are given here, the types of primary issues. The first one is public issue. Here public issue itself, we can just get to know that public issue is an public limited company which actually desires to raise the capital by inviting the public
to come and issue as according to the prospectus. What actually the prospectus is? Prospectus is actually a document having an public invitation to come and invest in the general public for purchase of shares. So now second one is issuing of right shares. Here a company can issue through the equity shares and give rights to their existing shareholders. Right shares are always being issued through the shareholders are actually being exist. They have already being invested in our company. They are actually given the first priority and known as an existing shareholders to purchase these shares. And here existing shareholders are given the right, as I told, and also the new issues are given in their proportion. First of all, the right issues are like in existing shareholders are given the preference. They just complete that process and all, and then and only then we can allow the new issue for the proportion. And also the proportion is fixed, not that we can allow the existing shareholders in whatsoever proportion they want, but for here new issue there is an proportion fixed accordingly, right? So here the right shares can resold and transferred into another person's name after applying the right to buy, as according to the Companies Act. The third one is private placement. Here in this method, actually companies issuing the shares, or here the brokers sell the shares to their own customers who have actually previously bought the shares from them. So here company actually issuing the shares or the brokers purchase the shares in lots for their own customers. So here in this private placement, brokers play an important role as well as in wholesale traders. Actually यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में बल्क में सारा परचेज किया जाता है एंड देन रिटेल में सेल किया जाता है सब लोगों को, ठीक है. सो प्राइवेट प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ ट्रेडिशन, वन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम हम बोल सकते हैं इंडिया के लिए, बट लेकिन वेरी पॉपुलर इन द फॉरेन कंट्रीज. So this is all about private placement. Now here deciding the types of security for issue is also very much important. यहाँ पे हमने देखे कि कौन कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस है, कॉमर्शियल पेपर है, ये सारे क्या है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है कि किस में हमको किस समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है. So these are the like equity shares, preference shares, commercial paper, deposit certificates, debentures, bank loan, loan from financial institution, foreign loan, public deposit and intercompany deposit. So here while choosing an security for issue, the company should be kept in mind and then its purpose also कि हमको कितने टाइम पीरियड के लिए है, क्या बेनिफिट है. सबसे पहले कंपनी का भी ग्रोथ कैसा है, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट. सो हियर डिसाइडिंग, देन वी विल जस्ट सी डिसाइडिंग द मेथड ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स. अब मेथड क्या है, सबसे पहले शेयर्स आर गिवन एज अगेंस्ट द कैश. आप कैश देते हो, आपको पे करना पड़ता है उसके, और में आपको सामने क्या मिलता है, शेयर्स मिलते हैं. देन दी शेयर्स आर गिवन फॉर टेक्निकल नो हाउ एंड नॉलेज. आपके नॉलेज के उसमें पूरा नॉलेज भी दिया जाता है कि इतने टाइम का आप देखना आपका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा एंड ऑल, एंड शेयर इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, इसकी ग्रोथ लेवल अच्छी है. दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग गिवन टू अस, कि पूरा नॉलेज मिलता है कि ये एक्चुअली कंपनी भी क्या क्या कर मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या काम कर रही है, ठीक है. So this is how we just get the knowledge about the company. And the third one is like कि share gives an substitute for the share of other companies. उसमें substitutes भी available होते हैं. Then the fourth one is share is given to the promoters and brokers as compensation for their services. यहाँ पे क्या मिलता है कि 1-to-1 कस्टमर्स के पास नहीं जा सकते. सो दिस इज हाउ शेयर्स आर ऑल्सो सोल्ड टू द प्रमोटर्स एंड द ब्रोकर्स अंडर विच सिस्टम, दैट इज द सिस्टम एक्चुअली वी जस्ट सॉ, दैट वाज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट. वहाँ पे क्या करते हैं, बल्क में परचेस करते हैं एंड देन वो लोग क्या ढूंढते हैं, 1-to-1 कस्टमर ढूंढते हैं, और देन 10 शेयर है, 50 शेयर है, 100 है, 1000 है, उस टाइप के वो लोग शेयर क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी मार्केट. Now we will just see what actually the primary public issues are. Okay, so here primary public issues over here is like ki public offer is very important over here and concerned as in financial responsibility we can say. And here also these laws, rules, regulations and provisions are actually being let down by the SEBI.
So SEBI is here to work over here and also gives the faith to the investors regarding the giving companies information and giving an advertisement and all. So then and only then the investors can invest if once the faith is being created with that company. Now we will just see actually what the meaning of primary public offer for the share is. So here, before the registrations of the shares of the company in the stock exchange, they offer that the company can place before the public issue of the security shares, and that is known as primary or initial public offer, that is we can say IPO. So IPO release करते हैं, then FPO release करते हैं. FPO is not that much now existence now, but I will just let you know that what actually the FPO is and what actually the IPO is also, right? So before just being registered in the stock exchange, they have to place public issues in the equity shares, that is in equity shares or in the IPO, right? कि वहाँ से कैसा response मिल रहा है, then and then they can get the registered in the stock exchange. Now here public issue क्या रहता है? This is also the same for raising the funds from the public at a large, right? वहाँ पे भी यही था, बट वहाँ पे क्या था, स्मॉल. यहाँ पे पूरा बड़े स्केल के बेसिस पे कि वो लोग पूरा पब्लिक्स को मेन दे आर जस्ट वर्किंग फॉर रेजिंग द fund with from the public. So here company actually invites the public at a large for subscribe the shares and purchase the securities. So this is one of the common source of raising the fund from the development of the secondary market. So here it becomes a more popular. अभी भी आप देखने जाओ तो ज़्यादा पॉपुलर यही है प्राइमरी पब्लिक इशूज शेयर्स वाला, ठीक है. सो आई विल जस्ट दिस इज जस्ट हाउ बीइंग कंट्रोल्ड. परमिशन वाज एक्चुअली बीइंग टेकन बाय द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू एंड all these were enacted under the SEBI Act in 1992. Now I will let you know IPO. IPO is an initial public offer. It is a source which is actually, as I told you, listed नहीं होता है, registered नहीं होता है. सबसे पहले वो लोग IPO release करते हैं and then only response के बाद वो लोग क्या करते हैं, उनको registration in the stock exchange मिलता है, ठीक है. So here IPO is just available with an unlisted company to raise the fund from the public for the first time. वो लोग क्या करते हैं, IPO release करते हैं कंपनी के, ठीक है. सो दिस इज हाउ फर्स्ट टाइम द पब्लिक ऑफर इज मेड बाय द कंपनी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एन IPO. FPO इज अ फर्दर पब्लिक इशू. अभी नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, फर्दर इशू मतलब कि वंस ऑलरेडी इट हैज बीन इशूड बाय द पब्लिक थ्रू IPO, बट अगेन व्हेन द कंपनी इशूड्स द कैपिटल फॉर द पब्लिक टू गेन और टू इनवाइट द पब टू गेन मोर, राइट. सो अगेन दे आर इनवाइटिंग द पब्लिक after the released of the IPO, that is what known as an FPO, that is what called an further public issue. Okay, so here company is inviting a public for the need to issue the prospectus to the public, and here prospectus then contains the detail about the issuer and the purpose for which actually the finance is needed, and without the other necessary details being enacted by the SEBI rules and regulations, ठीक है. एंड नाउ वी विल जस्ट सी द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्राइमरी पब्लिक ऑफर. अब यहाँ पे इन लोगों ने थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस किए हैं कि वो सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन सेल ऑल द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. द फर्स्ट वन इज दैट कि फिजिकल एसेट्स ऑफ द कंपनी के पास 3 साल से होने चाहिए और 3 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है. एंड देन द कंपनी मस्ट हैव अ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट भी 3 साल में एटलीस्ट 3 ईयर्स तक आउट प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आउट ऑफ इट्स वर्किंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स. अगर 5 साल से काम कर रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल लास्ट 3 साल के, ठीक है. देन द नेट असेट्स ऑफ द कंपनी इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स मस्ट बी ऑफ ₹1 crore, and here the increase of the price must not be 5 times the price of the shares of the previous issue. So this is how अगर company unregistered है and here they have to fulfill the above conditions which actually I just gave you now, ठीक है. अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली अगर पब्लिक ऑफर इश्यूज करती है शेयर्स को तो 2 कौन सी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए. तो 2 कंडीशन हम देखेंगे. The first one is here, the price of the share of the public issue should not be kept according to the book value,
and 50% of the total should be allotted to the institutional investors of the good standing. So here in case अगर वो कोई कारण की वजह से नहीं कर पाती है और it fails to do so, then it have to refund the full amount received. Or other, there must be a partnership with the financial institution, scheduled bank, or up to the minimum 15% in the project, or the 10% among the total issue that should be allotted to the good financial institution. Okay, and then the second one is here कि amount of जो equity share capital होती है issue उसकी क्या होनी चाहिए, 10 करोड़ होनी चाहिए. ठीक है. So these are the various conditions to be fulfilled. Now we will just see the main stages of the primary पब्लिक इशू. वेरियस स्टेजेस. द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट से सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है. उसकी परमिशन ले लेते हैं, देन पब्लिक इन्विटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम करते हैं काम. देन द सेकेंड वन इज परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल. शेयर होल्डर्स की भी परमिशन लेनी पड़ती है, राइट. लाइक कंपनी इज एक्चुअली वर्किंग बट हियर कॉल ऑफ अ मीटिंग एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको मैंने बताया ना पहले आपको देते हैं परमिशन, तो उनकी परमिशन, रिजोल्यूशंस, इशू ऑफ शेयर्स और वो सब काम करना पड़ता है. देन द थर्ड वन इज कि लीड मैनेजर होता है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. देन स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सारे स्क्रीन होते हैं. देन उसके बाद इंटरमीडियरीज होते हैं जो हमको पूरा सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं एंड बैंक के साथ उसने आगे सब अच्छे से डीलिंग की है. तो दिस इज हाउ एक अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरी सारा ये काम करते हैं, उनको हम अपॉइंट करते हैं. देन बजट बनाया जाता है, बजट फॉर इशूइंग शेयर्स. उनकी सबकी फीस होती है, उसमें ब्रोकरेज की, पोस्टल एक्सपेंसेस एंड ऑल, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बजट फॉर इशूइंग सच शेयर्स. देन प्रिपेयरिंग इन प्रोस्पेक्टस मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग पूरा प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करते हैं कि किस तरीके से बनाना है. देन सेंडिंग एन अप्रूवल दैट प्रोस्पेक्टस टू दी सेबी. जो हमने प्रोस्पेक्टस बनाया होता है देन वो हम सेबी को बेचते हैं. देन वो लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं. देन डीमेट ऑफ शेयर्स बनाए, डीमेट ऑफ शेयर्स that is like an makes and contracts with the depositors and the registers, that is which providing the facility of dematerialization of the shares. Then regarding underwriters की एक procedure होती है which actually specifies that how many shares and how much the total value have to be underwritten. Then modifications in the prospectus होता है तो उसका time limit होता है कि which is actually drafted in 21 days. राइट. एंड देन इफ अल्ट्रेशन आर नीडेड देन वो पूरा एक मॉडिफिकेशन होता है उसका. देन सेंडिंग दैट प्रोस्पेक्टस टू द कंपनी रजिस्ट्रार. Then after sending the prospectus to the company registrar, then the meeting is actually done with the various parties like brokers होते हैं, investors होते हैं, journalists होते हैं, उनके साथ मीटिंग की जाती है. देन उसके बाद डिक्लेरेशन इज देयर रिगार्डिंग द इशू एंड देन फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. देन डेज फॉर कीपिंग द इशू ओपन. वो मिनिमम जैसे देखो न्यू शेयर्स इशू होते हैं ना तो मिनिमम 3 days के लिए और मैक्सिमम 21 days के लिए ओपन रहता है. देन अलॉटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल्स के हिसाब से अलॉटमेंट किया जाता है. देन द रजिस्ट्रेशन इन द डीमेट अकाउंट इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है. सो दिस इज हाउ अ वेरी मेन स्टेजेस फॉर द प्राइमरी पब्लिक इशू इज टू बी डन. थैंक यू.